आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आज मैं आप लोगों को किन्नौर के बरी गांव में रहने वाली 84 वर्षीय रबजुंगमा भिक्षुनी छोसम डोलमा जी से मिलवाता हूँ। इनके नाम का अर्थ ही है धर्मपरायण और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने नाम अनुरूप जिया है। मुझे लगता है कि वे सही मायने में किन्नौर में एक सशक्त और साहसी महिला के प्रतिमान हैं। इनका संपूर्ण जीवन एक समाज सुधारक, पथ प्रदर्शक और जन कल्याण के कार्यों में ही व्यतीत हुआ। इनकी उदारता, सहनशीलता तथा विनम्रता हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने बरी गांव में देशिन कालजंग छोलिंग गोम्बा बनाने में अपना संपूर्ण जीवन को खपा दिया। रबजुंगा जी के इस निष्ठावान संकल्प, त्याग और समर्पण भाव पर हमें नाज है। आइए पहले सुनते हैं इनके इस गोम्बा को बनाने से संबंधित कुछ संस्मरणों को। रबजुंगा जी किन्नौरी बोली में बोलेंगी, जिसका मैं बाद में संक्षेप में अनुवाद करूंगा। Solo yung grimala Yesheri muchurimata Sielano to chaga pio Nogunoguno Wishimo Chonkoling bio Ode dosho Chonkoling Kangiru Lunzuga Limechi Yabungishin Machi Resintan Mamutan Machi Dok do Odomia mi bari sonum sago Wal Serakomiga Ides do 폴롱아 가도 이래 소가 불모 가도 이래 자 불려 와 선업상어 와리 선업상어 록사 도리볼 것이나 선업사세 디메 자가리메 저지메 너네 자래관 본조서 록사다 내놓으세요 선업상모 자가 버리 미 버리 너르 버리 너르조르 어데라노 저방이 잔잔 너 오줌을 것이나 악물을 것다 쳤지 나 쳤지 마도 못해 선업삭자리 마도 자가리 마도 조스파니 마도 오늘 조사 너 란자리 마도 넉자리 뭐라 이 렘노데스 자가 렘노스카니마 이가도데스 독시목사가 니마 그 방이니 또 자자 란모하니 쇼아마니 쇼자로 오도순제제 너 곤팔란모 두시스마테 곤팔란모 두셰로 발레 노르타 쳤지메 루피아타메 쳤지메 너해님 너 허대 다마니 해란노 도시스토 야뭉촌잔 엘리트 마롱숑 니자데 셰콘데르관 오게르가노 까까 오체 도 팔라스탈란 모코네 난지레노 바롱 비비 포르제아시 도 보보게르가니스 보보 란란 케레시 팔라스탈세 란란 도도메 숑고도 소마나 아네스케도 케도도 오르란 시초니가노 라기스 아통스 니슌다 용관이가 오르라노 너 보니 아니야 당당케게 너 해시신 모베롱 메차디 에데서 정원 캬문이 아미사이 디통아 에데서 비아롱 에네기리 뭐지 야봉게신 뭐지 아또지 에데서 정 노제단 정 이면 네기리 뭐지 손 시신 믹스 아닌 거 시셰리치 너 로션 네기리 거 벨레 로시시 된 로시시 시다이 비팅어 마제제 로시시 로구모 카프라신 미르 도알 병이 뭐도 오타로 함도니 오타 카프라 함도니 너 호텔 안 미그리고 송송 알코코 너 며칠때 루피아케게 훔니자다 루피아 이 잔리가 주가게로 오제스케 리리 당당 루피아 도라리 너 시우나 핌기아트링 시한 핌이 딜리빔기아트링 코네스메 코네스 까놈이게간 야남 질라 까체니 뭐지 아니시코네 사초 피지 뭐 더비비 딜리니가 리동 까체니 뭐지 뭐 딜리비비 도 까시 시조조 너크니피 내처다 믹싱도 뭐 르기아믹스야 저 배롱 송히 제도 신기아믹스야 디에스네 유다비시세 디에스네 예버대롱 송도도 못 되겠지 오늘은 싱부터 말이 싱비자도 라고다난란은 싱마 버리다 다운스케 따져도 돼요. 또 그러면 너 그ring에 시티에서 타라오 그도 누시다 그ring어 비오 안에도 송지도 안에 뒤에서 이게 송지야 돼. 좀 넣어대대. 너 비오리 송지도 어도가 세스 이 앞다봉 어도가 논 듀티 정시시 버리. 너 비비어도 그러신 날 아테도 오는 아몬 그러신 날 오늘 아들 제가 보통하게 야군 발란노 그다 보통하게 야기한도고 오호 잘로함데 이게리고 뭐시하니 독도 심어도 그죠 우리 디셈버에 이때면도 뽐보다
뻔무스덩 하니 뿌라도 보상 쯔이 팔팔 땅땅 또다가 란란 땅땅 너 쯔이 하니 착지시시 대란란 게게시 오도니 베레남니 비다도 마차리 하시면 너 까먹고 부르란시서 란란 쯔이 너 뿌라 하지 못해 어떻게 다셔 원바데 알아지스도 다 오는 원바데 알아지는 너 온도 람노슬란모 람노슬란모 베롱도 나마히 해리가 가방 예시면 제시오모 비비 노름살라 그리고 제번이 견야 좋지요네 온라인 렘노데서 데스케 하체 온노 람노슬란노링어 그래요 제 람노슬란모 그만이 로자님의 제비미가트요 로자님의 제니마 님소리 판스 뉴미 그만이링어 로자님의 지금 한 클로도 너마 한 로데로 많이 사만이 이러면데 한 처만 미 에리면 지가도 그러면 제가 슈슈다 닥지 보라 그 슈슈티 알란다 바키 람노수 소만 제가 요아리면 제 슈슈 요아리면 저다 오는다 양밍 마기 아리고 너끼나 어두등 뿌라데 알아제롱 비모 야리지 너님 때 알아제롱 미비 엄청 본다만 있지나한테 어디서 게임한테 너 나저 마롱니 시비비 슈모세 아리면 제 슈모세야 뭐자 쳤음들 말이요 레시면 제니 뭐치미시다 오늘이면 제시모도 할라모 되요 뭐보다 뭐 마문 나 터지고야마도 왜 그때 알란란도 째요도 뿌라가 슈슈리면 제니 이와는 주닥죠 너람노수 소만 그 찌까까 뿌라때 알로 명밍마게 하리고 너리면 제가시면 돼 그러면 제가가 너사면 제가 도트면 미세 바리 하체모 안 하니 요긴 어린 하니 살아 단데 만세 머리 우리 동치숑 뭐노 뻔남숑노 와리미야지 오늘 아람도 사체 아내가 건지고 같은 또 꺼내란 지가 가서 와 남미가 봐너 덕지도 못해 제천이 많이 내가 형대 형미도 제자자스가 와리 남기도 딱 꿀먹거든요 아리만 솔롱도 저대 좋아 딱고 꿀꿀도 찌자가 달란란 모두 봉도 storma가 난모 땅모 쯔요도 제자자 와르버도 가모 아니 고마नी से हाली हो हालो शो हाली सारा राबजुंगमा जी कहते हैं कि वे सर्दियों में पढ़ाई के लिए छोसोलिंग गोम्बा ब्रेलिंगी में जाया करते थे। एक बार यह हुआ कि ग्याबुंग गेशे रिमुची जी ने वहां पर गोम्बा में कंग्यूर का लुंग दिया था। तब उन्होंने देखा कि सारे सायरा के लोग उस लुंग के दौरान कोई भोजन दान कर रहे थे, कोई फल सब्जी चाय सॉक्स पूजन सामग्री का दान करते हुए महान पुण्य अर्जन कर रहे थे। इसे देखकर वे भी सोच में पड़ गए थे कि हमारे इलाके में तो ना कोई गोम्बा है ना कोई लामा जोमगन है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसलिए गांव में एक गोम्बा का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने बड़ी गांव में जैसे तैसे ग्याबुंग छोंसो जी के मदद से गोम्बा के नाम पर रहने लायक एक कमरा बनाया था। सर्दियों में जब वे बोध गया जाते थे तो वे वहाँ पर नेगी रिमुची जी और ग्याबुंग गेशे रिमुची जी का दर्शन करते थे। एक बार नेगी रिमुची जी ने उनसे कहा कि गोम्बा के अंदर भित्ति चित्र उकेरना आवश्यक होता है। भित्ति चित्र बनाने के लिए सामान लाने में कानम गांव के गुरुजी रामजी तथा रिब्बा गांव के काजिन रिमुची जी ने बहुत मदद किया। भित्ति चित्र और गोम्बा का निर्माण पूरा करने के लिए उनके पास लकड़ी नहीं था। इसके लिए वे श्री टी.एस. नेगी जी से अनुरोध करने शोंग गांव गए थे और उन्होंने शोंग गांव के ही बीओ श्री कृष्णलाल जी को भेजा और उन्होंने जंगल से लकड़ी निकालने में उनका भरपूर सहयोग किया। इस तरह गोम्बा तैयार हो गया। गोम्बा के राम ने अधिष्ठान के लिए ग्याबुंग रिमुची जी से अनुरोध किया तो उन्होंने परम श्रद्धेय लोचा रिमुची जी से आग्रह किया। गोम्बा अधिष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री के लिए ग्याबुंग गेशे रिमुची जी ने परम पावन दलाई लामा जी से विनती किया था। बाद में जब वे लोचा रिमुची जी को आमंत्रित करने के लिए धर्मशाला पहुंचे तो उन्होंने पूरा सामान तैयार रखा था। उसके बाद परम पूज्य लोचा रिमुची जी ने यहाँ बड़ी गांव में पधार कर इस गोम्बा का विधिवत अधिष्ठान किया। गोम्बा अधिष्ठान के दिन पूरे किन्नौर से लोग आए थे और बहुत संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। गोम्बा को बनाते समय संयोग यह रहा कि गांव के लोगों का इसमें बहुत ही सहयोग रहा, विशेषकर महिलाओं का। जब भी यहाँ पर कोई कार्य होता था तो वे बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए आगे आते थे। गाँव की महिलाएं दिन भर यहाँ गोम्बा में कार्य करते हुए बातचीत हंसी मजाक के साथ समय व्यतीत करते थे।